Om Agyantimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tatatishva Padandikam Namashrishtam Manum Api Sachiputram Attasarupam Rupam Tasya Graham Ruparim Maturim Gushtavatim Radha Kundam Giribalamaho Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurun Tannatosmi. Hey Shri Guru Jnana Dharina Bandhu Swananda Datak Gurunaika Sindhu Vrindavan Asina Hitavatara Prasida Radha Pranaya Prachara Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Zitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhubhevya, Patitanan Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Where's the translator? Hare Krishna. Hare Krishna. How are you? Krishna, Your Mercy Maharaj. Good. By the grace of Radhe Shyam and Sri Vrindavan Dham, I was in Vrindavan when the COVID lockdown began. तो श्री श्री राधे श्याम की कृपा से मैं श्री वृंदावन धाम में था जब कोविड महामारी में बंद शुरू हुआ था उस समय. So I've been in Vrindavan for practically 2 years. तो मैं श्री वृंदावन धाम में लगभग 2 वर्षों के लिए एक साथ रहा हूँ. And it has been wonderful. और ये बहुत ही अद्भुत है. Just to be in my home in Vrindavan and to be encircled by our small bagicha. तो ये बहुत ही अच्छा है. मेरे घर में मैं हूँ श्री वृंदावन धाम में और मैं घिरा हुआ हूँ मेरे बगीचे से. And every day to hear all of the different birds speaking in the bagicha. और हर दिन मैं सुन सकता हूँ अलग अलग पक्षियों को बात करते हुए मेरे बगीचे में. And periodically going out and very fiercely chasing the monkeys away. और समय समय पर लगातार वो पक्षी बाहर आते हैं और बहुत जमकर बंदरों को बाहर भगाते हैं. And certainly I did not think that I would be leaving Vrindavan during Kartik. और अवश्य ही मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं श्री वृंदावन धाम से बाहर निकलूंगा कार्तिक महीने में. But our Indian government issued a directive. परंतु हमारी भारतीय जो भारत में जो हमारी प्रजा है उसने एक नया नियम निकाला. That we people who had been on long-term tourist visas, we should exit the country by 31st of October. तो जो लोग भारतवर्ष में पर्यटक वीज़ा पर हैं वो 31 अक्टूबर तक उनको भारत छोड़ना होगा. And because the government has been so kind and gracious, I made arrangements to follow the instructions. क्योंकि शासन बहुत ही
कृपामय रहा है और दयालु रहा है, तो मैंने निर्णय लिया मैं उसके नियम का पालन करूंगा to apply for a new visa for India. और मैं एक नई वीज़ा के लिए विनती करूंगा भारत में वापस प्रवेश करने के लिए। Um, I have very beautiful deities, मेरे पास बहुत ही सुंदर विग्रह थे and I didn't want to take my deities out of Vrindavan और मैं नहीं चाहता था मैं मेरे विग्रहों को वृंदावन से बाहर निकालूं, because while they have been living there, they have been receiving the most amazing seva. क्योंकि जैसे ही मेरे विग्रह जब से वहाँ पर रह रहे हैं वे प्राप्त कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत सेवा को। My deities are very tiny, ये बहुत ही छोटे विग्रह हैं and there is a group of very devoted ladies there. They make the most beautiful microscopic garlands every day. और बहुत ही समर्पित महिलाएं हैं वहाँ पर जो इन विग्रहों के लिए बहुत ही छोटी फूल की मालाएं प्रतिदिन बनाती हैं। And yeah, just such beautiful garland seva, and Vrindavan is a paradise for, you know, getting as many mala as you want for decorating the altar. हाँ, तो इतने अद्भुत फूल की मालाएं हैं और आप जानते हैं वृंदावन वो स्थान है बिल्कुल स्वर्ग की तरह है जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की मालाएं मिल सकती हैं मंदिर को सजाने के लिए। And with Diwali and Govardhana puja, there's no place where they could get sweets like Vrindavan. और दिवाली और श्री गोवर्धन पूजा के महोत्सव में ऐसा और कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आपको मिठाइयाँ मिलेंगी जैसे कि श्री वृंदावन में मिलेंगी। I'm lucky to be here in your association. मैं भाग्यशाली हूँ यहाँ आपके संग में आकर। I'm lucky not to be there because I probably would have eaten 2 kilos of sweets today. तो मैं भाग्यशाली हूँ मैं वहाँ नहीं हूँ क्योंकि अगर आज वहाँ होता तो कम से कम 2 किलो मिठाइयाँ खा लिए होते। But my first deity that I ever worshipped was Giriraj Maharaj. और जो पहला विग्रह जिसकी मैंने उपासना की थी वो थे गिरिराज महाराज। And it occurred to me this morning that this is the first Govardhana puja in 36 years that I've not been with my Giriraj Shila. तो आज सुबह ही मुझे ये स्मरण हुआ कि ये पहली गोवर्धन पूजा है 36 वर्षों में जब मैं अपनी शिला के साथ नहीं हूँ। And generally every year we give him such a special abhishek. और हर वर्ष हम उस शिला को बहुत ही अद्भुत अभिषेक देते हैं। And literally kilos and kilos and kilos of sweets. और हम अन्य किलो इतने सारे किलो मिठाइयाँ देते हैं शिला को। But I'm here and he is there. परंतु आज मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है। So during the kirtan, while you all were chanting, I was meditating on my Govardhan Shila. तो कीर्तन के समय जब आप सब कीर्तन में भाग ले रहे थे मैं ध्यान कर रहा था मेरे गोवर्धन शिला पर। And when you all were like singing the holy names beautifully, I was bathing my Giriraj with those holy names. तो जब आप इतनी सुंदरता से कीर्तन कर रहे थे मैं उन सुंदर नामों से मेरे गिरिराज को नहला रहा था। And when you were singing so beautifully, that singing I was offering as those, you know, 10-20 kilos of mithai that I would offer to Giriraj today. और जैसे ही आप गा रहे थे मैं वही जो 10-20 किलो मिठाइयाँ गिरिराज को हर वर्ष देता था आज आप जब गा रहे थे उस समय उन्हें वो अर्पित कर रहा था। Our Rupa Goswami has taught हमारे रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया है that to be Krishna conscious, to become Krishna conscious, we must reside in Vrindavan. कि यदि हमें कृष्ण भावना भावित होना है तो हमें वृंदावन में निवास करना चाहिए। And if we can't be there by body, we should be there by mind. और अगर हम वहाँ शरीर से नहीं हो सकते तो मन द्वारा वहाँ होना चाहिए। So I had nice experience in chanting the holy names today that I could worship my beloved Giriraj in Vrindavan Dham. तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ आज यहाँ पर जप करते हुए
और मैं स्मरण कर पा रहा था कि मैं मेरे गिरिराज की उपासना कर रहा हूँ जो वृंदावन में है। So today is the celebration of the Govardhana puja. तो आज श्री गोवर्धन पूजा का महोत्सव है। And I think quite safely that most of you know this Leela. और मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप में से अधिकतर इस लीला को जानते हैं। Many of you have heard it from the time that you were children. आप में से बहुतों ने ये लीला सुनी है अपने बचपन से ही। You've heard how young Krishna lifted Govardhana mountain on his left finger. तो आपने सुना है कैसे छोटा कृष्णा उसने गोवर्धन पर्वत उठाया अपने बाएं हाथ की उंगली पर। And he held it on his finger for 1 week. और उन्होंने इसे अपने उंगली पर उठाए रखा 1 सप्ताह के लिए। And one reason that he did that was that he wanted to really destroy the pride of his devotee Indradev. और एक कारण कृष्ण ने ऐसा किया वो ये था कि वो अपने भक्त इंद्रदेव का जो घमंड है उसका नाश करना चाहते थे। And another reason is this. और दूसरा कारण ये है, In Vrindavan, there is always competition to be with Krishna. तो वृंदावन में हमेशा प्रतियोगिता रहती है कि कौन कृष्ण के साथ रह सकता है। Very intense competition. बहुत ही गंभीर प्रतियोगिता होती है। In Vrindavan, there's always so much political intrigue going on. वृंदावन में हर समय राजनीतिक साजिश चल रही होती है। But what is that political intrigue? परंतु ये राजनीतिक साजिश क्या है? The political intrigue there is that when Krishna is in contact with his mother Jasoda, he becomes overwhelmed by her love. तो ये राजनीतिक साजिश ये है कि जब कृष्ण संपर्क में रहते हैं अपनी माँ यशोदा के साथ, तो माँ यशोदा के प्रेम द्वारा वो अभिभूत हो जाते हैं। We know that this is the main theme of the Damodar Leela. हम जानते हैं यही मुख्य विषय है दामोदर लीला का। That Krishna becomes submissive to the love of his devotees. कि कृष्ण अपने भक्तों का जो प्रेम है उस पर समर्पित हो जाते हैं। And when Krishna is with Jasoda, then his boyfriends can't get to him. और जब कृष्ण यशोदा माँ के साथ हैं तो उनके जो अन्य मित्र हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाते। The gopis can't get to him. गोपियाँ उस समय कृष्ण तक नहीं पहुँच पाती। His servants can't get to him. उनके अन्य दास उन तक नहीं पहुँच पाते। So a lot of intrigue is going on. तो बहुत साजिश चल रही है। How can we get Krishna? कैसे हम कृष्ण को पाएं? For example, one time Sri Radha was with her girlfriends. तो उदाहरण के लिए एक बार श्री राधा अपनी अन्य सखियों के साथ थी। And she was in a state of lamentation. और वो शोक की स्थिति में थी। And her exalted girlfriends like Sri Lalita and Sri Vishaka, they were saying, "What is the problem?" और उनकी अन्य उच्च सखियां जैसे ललिता और विशाखा वो श्रीमती राधा रानी से कह रही थी क्या समस्या है? And Sri Radha, who was the foremost of all devotees of Krishna, और श्री राधा जो हैं वो कृष्ण की भक्तों में से सबसे उच्चतम हैं। she was saying, "I am not advanced enough to be with Krishna." तो वो कह रही थी कि मैं इतनी उन्नत नहीं हूँ कि मैं कृष्ण के साथ हो सकती हूँ। She was saying, "I have many anarthas." वो कह रही थी कि मुझ में बहुत अनर्थ हैं। Now, all of you here in Damodar Desh, you're good Shastris.
अब आप सब जो यहाँ पर दामोदर देश में हैं वो बड़े बड़े शास्त्री हैं And you know that anarthas are unwanted things that block our access to Krishna. और आप जानते हैं कि अनर्थ वो अवांछित वस्तुएं हैं जो हमारा कृष्णा से संपर्क है उसमें रुकावट डालती हैं। But Lalita and Vishaka, they said, "You have anarthas? What are your anarthas?" तो विशाखा देवी ने राधा रानी से कहा, आपको अनर्थ है? क्या है आपके अनर्थ? "You have no anarthas." आप में कोई अनर्थ नहीं है। She said, "No, I have anarthas. राधा रानी ने कहा, नहीं, मुझ में अनर्थ Very serious anarthas." बहुत गंभीर अनर्थ है। "What are they?" क्या है वो? "Mother Jasoda is an anartha. उन्होंने कहा, माँ यशोदा अनर्थ है। Sudam, Subal, Madhumangal, they are anarthas. सुदाम, सुबल, मधुमंगल ये अनर्थ है। Raktak, Patrak, they are anarthas. रक्तक, पत्रक ये अनर्थ है। And those cows, they are anarthas. और वो गायें वो अनर्थ हैं Because they keep me away from Krishna. क्योंकि वो मुझे कृष्ण से दूर रखती हैं। So, everybody wants to be with Krishna. हर कोई कृष्ण के साथ होना चाहता है। And when he lifted that hill, when he lifted that hill, और जब कृष्ण ने वो पर्वत उठाया and he held it on the tip of his finger और for 7 days, और उन्होंने अपने उंगली की नोक पर उसे 7 दिन तक उठाए रखा। everybody in Vrindavan came under that hill हर कोई जो वृंदावन में था उस समय उस पर्वत के नीचे आया for 1 week straight. और एक सप्ताह के लिए And they could all drink the beauty of Krishna. और वो सब कृष्ण की सुंदरता को पी सके थे। And Krishna could drink the beauty of his loving devotees. और कृष्ण पी सकते थे उनकी भक्तों की सुंदरता। We should always remember, हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, relationship is not a one-lane street. जो संबंध है या जो रिश्ता होते हैं, Relationship is a two-way street. वो केवल एक तरफा गली नहीं है, रिश्ते और संबंध दो तरफा गली है। The devotee loves Krishna and Krishna loves the devotee. जो भक्त हैं वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण भी भक्तों से प्रेम करते हैं। The more we will show our love to Krishna, the more Krishna will show his love to us. जितना अधिक हम अपना प्रेम कृष्णा को दिखाएंगे उतना अधिक कृष्णा उनका प्रेम हमको दिखाएंगे। This is why he instructs us in the Bhagavad Gita. इसीलिए वो हमें भगवत गीता से आदेश देते हैं, Je jita mam prapadyante tang sthitaiva bhajamyaham. That as they approach me, I reward them. कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे भक्त मुझसे संपर्क करते हैं मैं उस तरह उन्हें पुरस्कृत करता हूँ। So, Govardhana Leela. तो अब गोवर्धन लीला, And this Govardhana Leela is around one personality, Govardhan Hill. और ये गोवर्धन लीला एक व्यक्ति के इर्द गिर्द है, वो है श्री गोवर्धन पर्वत। So today we will just look at Govardhan for a few minutes. तो आज हम कुछ समय के लिए श्री गिरिराज को देखेंगे And understand how Giriraj came to this world and how Giriraj manifests in the spiritual world. तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे श्री गिरिराज इस जगत में आए और कैसे गिरिराज जी आध्यात्मिक जगत में होते हैं। So one day in Goloka Vrindavan, Radha and Krishna were sitting in a beautiful, beautiful bower of flowers on the side of the Jamuna. तो एक दिन गोलोक वृंदावन में राधा और कृष्णा बहुत सुंदर फूलों के बीच में बैठे थे यमुना माँ के तट पर। They had been performing many pastimes. वे बहुत लीलाएं कर रहे थे। And they were sitting together and they were resting. और वो एक साथ बैठे थे और आराम कर रहे थे। And in that very confidential moment,
Sri Krishna turned to Sri Radha. और उस बहुत ही गुप्त समय में श्री कृष्ण राधा की ओर मुड़े And he said, my dear, उन्होंने कहा मेरी प्रिय Mera Priye, Priya ji, I have been summoned by Brahma to go down into the world of the men. उन्होंने कहा कि ओ मेरे प्रिय मुझे ब्रह्मा जी द्वारा बुलाया गया है कि मैं नीचे भौतिक जगत में आऊं। Just out of curiosity, are you typing the lecture as we go along, or are you quickly making bullet points of what you're saying in case I forget? Oh, okay. I was just wondering if you were at the office. He said, Priyaji, Brahma has summoned me. He has told me that I must descend into the world. उन्होंने कहा ओ मेरे प्रिय ब्रह्मा ने मुझे बुलाया है कि मैं इस भौतिक जगत में नीचे जाऊं। The kings are all becoming very bad. The kings are becoming very bad. तो जो राजा हैं वो बहुत बुरे हो रहे हैं। People are losing their qualities. लोग अपने अच्छे गुण खो रहे हैं। It is time for me to descend to perform my leela. तो ये समय है कि मैं नीचे अवतरित हूँ और मेरी लीलाएं करूँ। And then he smiled at Sri Radha. और वो श्री राधा की ओर देखकर मुस्कुराए। And he said, I want you to go with me. और कहा मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलें। And Sri Radha said, you know, I really have no desire to go to that world. तो श्री राधा ने कहा आप जानते हो मेरी कोई वास्तविक इच्छा नहीं है उस जगत में जाने के लिए। She said, how can I be happy there? उन्होंने कहा कैसे मैं वहाँ पर खुश रह सकती हूँ। She said, I could only possibly go there if this Brajadam is there, if the Jamuna River is there, and if Govardhana Parvat is there. तो उन्होंने कहा मैं वहाँ मेरा वहाँ जाना तब ही संभव हो सकता है जब वहाँ पर श्री रजधाम हो, यमुना मई हो और गोवर्धन हो। She said, without them being there, there's no chance for me to be happy. उन्होंने कहा इन तीनों के वहाँ हुए बिना कोई संभावना ही नहीं है कि मैं वहाँ खुश रहूँगी। And Krishna folded his hands and he said, please do not worry. They have already descended into the world to assist me in the performance of my pastimes. कृष्णा ने कहा अपने हाथ जोड़ के ओ उसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, वे पहले ही नीचे जा चुके हैं मेरे लीलाओं में मेरी सहायता करने के लिए। And Sri Radha looked at him and said, really? और श्री राधा Govardhana has gone to that world. और श्री राधा ने कृष्ण की ओर देख के कहा वाकई में गोवर्धन जा चुके हैं वहाँ। Krishna said, yes. He descended into the world and he became the son of the king of the mountains, King Dronachala. तो उन्होंने कहा हाँ वाकई में गोवर्धन जा चुके हैं और वो पुत्र बने हैं जो पर्वत हैं उनके राजा के पुत्र जो राजा द्रोणाचार्य। So then Radharani said, chalo, let's go. राधा रानी ने कहा चलो चलते हैं। Now, so Govardhana came from the spiritual world. He became the son of Dronachala. तो गोवर्धन आध्यात्मिक जगत से यहाँ आए और वो पुत्र बने द्रोणाचला के। And when he appeared in this world, in the Himalayas, he was adorned with exalted qualities. और जैसे ही वो यहाँ पर प्रस्तुत हुए हिमालयों में उनका जन्म हुआ था बहुत ही अद्भुत गुणों के साथ। Such beautiful waterfalls. बहुत अच्छे अच्छे झरने थे उनमें। Caves that were made from beautiful effulgent jewels and gems. बहुत गुफाएं थी जो बहुत ही उज्ज्वलित जवाहरातों द्वारा बनी हुई थी। And so many beautiful forests where they could have shade. और बहुत अच्छे जंगल थे जहाँ पर छांव हो सकती थी। So consequently, all the other mountains began doing the regular puja of Govardhana.
तो फलस्वरूप जो और अन्य पर्वत है, वो जो सामान्य पूजा है गिरिराज की, वो करने लगे। And they were so happy that we have such an exalted mountain in our family. और वो इतने प्रसन्न हुए कि हमारे परिवार में इतना उच्चतम पर्वत है। Then one day, I always get his name wrong, Pulatsya Muni. Pulatsya Muni was traveling through the universe. और एक दिन पुलस्त्य मुनि इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। And when he was traveling, he looked down and he saw this Govardhana mountain. और जब वो भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने नीचे देखा और इस गोवर्धन पर्वत को देखा। And he went, "Oh my goodness, such a beautiful mountain. उन्होंने कहा, ओ भगवान, इतना सुंदर पर्वत। I want that mountain to take with me to Varanasi." मैं चाहता हूँ मैं ये पर्वत को अपने साथ वाराणसी ले जाऊँ। He said, "This Varanasi is not like the Himalayas. उन्होंने कहा, ये वाराणसी हिमालय की तरह नहीं है। Varanasi is in UP. वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। Everybody knows what UP is like. सब जानते हैं उत्तर प्रदेश It's, कैसा है। it's all flat over there. वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल It's समतल है। hot all the time. वहाँ पर बहुत गर्मी है। And people have hot heads. लोगों का दिमाग भी गर्म है। He said, "I want to take this mountain." उन्होंने कहा, मैं ये पर्वत अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। So what he did is, Pulatsya, he went to Dronachala. तो पुलस्त्य द्रोणाचल के पास गए। Because he was a great Muni, Dronachala offered him all respect. क्योंकि वो बहुत बड़े मुनि थे, तो ब्रह्मचला ने उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। And then he said, "Maharaj, what seva can I do for you?" फिर उन्होंने कहा मुनि से, महाराज, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता And हूँ? Pulatsya said, "Your son is beautiful. पुलस्त्य ने कहा, आपका पुत्र बहुत सुंदर है। Your son is just so nicely adorned in so many ways. आपके पुत्र का बहुत अच्छी तरह से जन्म हुआ है, कितने अच्छे तरीकों में। I want to take your son with me to Varanasi." मैं आपके पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ वाराणसी। Then I can sit upon your son, have my ashram, and I can do my meditation. फिर मैं आपके पुत्र पर बैठ सकता हूँ, अपना आश्रम बना सकता हूँ और ध्यान कर सकता हूँ। He said, "Your son is so gorgeous. I just wish to take him with me to Varanasi." उन्होंने कहा, आपका जो पुत्र है इतना अद्भुत है, इतना भव्य है, मैं उन्हें ले जाना चाहता हूँ। So when Dronachala heard this, immediately his heart started to burn. जैसे ही द्रोणाचल ने ये सुना, उनका हृदय जलने लगा। You just think of, Dasarath Maharaj when Ram went to the forest. आप सोच सकते हैं दशरथ महाराज जी के बारे में जब राम वन गए। Or you think of Lord Nityananda's parents when Lord Nityananda went away. और आप सोच सकते हैं श्री नित्यानंद प्रभु के माता पिता के विषय में जब नित्यानंद प्रभु चले गए। Just wanting to die in separation. वे मर जाना चाहते थे उनकी दूरी में। But he couldn't refuse the saint. परंतु वो इस संत को मना भी नहीं कर सकते थे। So he folded his hands and he said, "Yes, you may take my son." उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, हाँ, आप मेरे पुत्र को ले जा सकते हो। But then Pulatsya, he went to Govardhana. और फिर पुलस्त्य गोवर्धन के पास गए। He said, "Your father said you could go with me." उन्होंने कहा, आपके पिता ने अनुमति दे दी है, आप मेरे साथ जा सकते हैं। He said, "Are you prepared to go?" उन्होंने कहा, क्या आप And- सहमत हैं जाने के लिए? And Govardhana said, "Yes, I can go, गोवर्धन ने कहा, but on one condition. हाँ, मैं जा सकता हूँ, परंतु एक शर्त है। If anywhere in the अगर journey you put me down for a moment, I will never leave from that place." अगर आपकी यात्रा के दौरान आपने एक क्षण भी मुझे कहाँ नीचे रख दिया, फिर मैं वो स्थान से आगे नहीं चलूँगा। And so then Pulatsya said, "Yes, I agree to that." फिर पुलस्त्य ने कहा, ठीक है, मुझे ये बात स्वीकार है। So then, having received the agreement of Govardhana, they began to travel. तो इस प्रकार से गोवर्धन को लेकर वो अपना भ्रमण आगे करने लगे। By the mystic potency of Giriraj, Govardhana, and by
Pulatsya's mystic powers, he was able to fly through the sky with Govardhana. तो गोवर्धन की रहस्यमय शक्तियों द्वारा और पुलस्त्य मुनि के रहस्यमय शक्तियों द्वारा वे उन्हें उड़कर ले जा रहे थे. But again, please remember, परंतु फिर से स्मरण कीजिए, why did Govardhana come into this world? गोवर्धन इस जगत में क्यों आए? He only came here for one purpose, केवल एक कारण के लिए, and that was to assist in the pastimes of Radha and Krishna वो राधा और कृष्ण की लीलाओं में सहायता करना चाहते थे and to do Krishna's seva. और कृष्ण की सेवा करना चाहते थे. So that's all he wanted. बस वही वो चाहते थे. So they were traveling, तो वो भ्रमण कर रहे थे. and then they started to fly over the tract of land which is known as Brajabhumi. फिर वो उड़ते उड़ते उस स्थान के ऊपर आए जिसे कहा गया है व्रजभूमि. And very mystically, when they were crossing Brajabhumi, Pulatsya Muni, he became overwhelmed with the urge to go to the toilet. तो बहुत ही रहस्यमय तरीके से जब वो इस स्थान से ऊपर गुजर रहे थे तो जो पुलस्त्य मुनि है उन्हें बहुत इच्छा हुई शौचालय जाने के लिए. He had to make shushu. वो शौचालय जाना चाहते थे और पेशाब करना चाहते थे. Yes, he had to do pishab. And it was interesting because Govardhana, he was saying something. और बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि गोवर्धन कुछ कह रहे थे. Govardhana was going, and we have some Russian people in front of us. तो गोवर्धन इस प्रकार से कह रहे थे. They may not know what that mantra is. और हमारे बीच में कोई हमारे रूसी भाई बहन हैं वो नहीं जानते हैं ये क्या है. But if an Indian mama wants her baby to do pee-pee, it's like shh, shh, shh. परंतु अगर कोई भारतीय माँ चाहती है कि उनके बच्चे पेशाब करें तो वो कहती है And Pulatsya looked at Govardhana, he said, I'm sorry, I got to put you down for a minute. और पुलस्त्य मुनि गोवर्धन को देखे और कहे क्षमा कीजिए मुझे आपको कुछ समय के I लिए have to do something. मुझे आपको कुछ समय के लिए नीचे रखना होगा. मुझे So कुछ just करना in है. Brajabhumi, he put Govardhana down. और उसी समय व्रजभूमि में उन्होंने गोवर्धन को नीचे रखा. And then he went to do his business. और फिर वो शौचालय अपना कार्य करने But गए. oh my goodness, it wasn't like a little business. पर वो कोई छोटा कार्य नहीं था. It was like he went and he went and he went and he went. तो ऐसा था वो शौचालय गए और गए और गए और गए. And Govardhana called out. और गोवर्धन ने पुकारा. He said, "Hey Maharaji, क्या problem है?" उन्होंने कहा ए महाराज जी क्या समस्या है. You need to see the doctor. He said, "Oh, I know one good doctor, Dr. Sundarananda. He is your urologist in London. He is like disciple of Radhanath Swami. He's very first class. You should go there." तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्या आपको कोई चिकित्सक चाहिए. तो मैं लंदन में श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी के एक शिष्य डॉक्टर सुरानंद को जानता हूँ. वो बहुत अच्छे चिकित्सक हैं. आप वहाँ जा सकते हैं. Maharaji, maybe you need checkup. महाराज जी शायद आपको दिखाना होगा किसी It's को. Vrindavan. You can go to Ramakrishna Mission Hospital. तो ये वृंदावन है वहाँ पर रामकृष्ण मिशन का भी अस्पताल है. So Pulasya finally finished his monsoon business. तो पुलस्त्य मुनि ने इस प्रकार अपने शौचालय का कार्य And समाप्त he किया. washed his hands and he washed his mouth and he washed his feet. और उन्होंने हाथ अपने धोए और मुख धोया और पैर धोए. And then he went back to Govardhana. और फिर वो वापस And गोवर्धन he गए said, "Let's go." और कहा चलो. And Govardhana said, "No, I'm not going anywhere." गोवर्धन ने कहा नहीं मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ. He said, "We had a deal. हमारे बीच में एक शर्त थी. You put me down anywhere, I'm not going." आप मुझे कहाँ भी रखोगे उसके बाद मैं नहीं आगे जाऊँगा. And then Pulasya, he became very angry.
और फिर पुलस्त्य बहुत क्रोधित हो गए, because it's the tendency of yogis sometimes to become very angry. और ये योगियों का स्वभाव होता है, कभी कभी वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं. You know, they want to do yoga. They're performing yoga. वे योगा करना चाहते हैं, योगा कर रहे हैं. But in Gita, Krishna says, Bhakti mam abhijanati yavaнясчасми tattvatah. He says, only bhakti cleanses the heart. और गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, कि केवल भक्ति हृदय को साफ करता है. So he became very angry. तो बहुत क्रोधित हो गए. And he said, I curse you. उन्होंने कहा मैं आपको श्राप देता हूँ. He said, I curse you मैं आपको श्राप देता हूँ that every day you're going to sink into the earth the length of one mustard seed. और उन्होंने कहा प्रतिदिन आप धरती में नीचे जाओगे, हर दिन एक बीज, सरसों के बीज जितना. Now, you know what Govardhana did? आपको पता है गोवर्धन ने क्या कहा? When he received that curse, Govardhana smiled. जब उन्हें वो श्राप मिला, गोवर्धन हंसे. And this is the way devotees are. और भक्त ऐसे हैं. When something seems to be like adverse or negative and it comes on the devotee always tries to see the positive aspect. कि कभी भी भक्त के साथ कुछ विपरीत या नकारात्मक कार्य होता है, तो भक्त उसमें सकारात्मक ढूंढता है. And Govardhana was thinking, और गोवर्धन सोच रहे थे, I'm miles and miles and miles high. उन्होंने सोचा मैं मीलों 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 ऊंचा हूँ. And my peaks are all covered with snow. और मेरी जो चोटियाँ हैं, And my peaks are always in the clouds. वो बर्फ द्वारा ढकी गई हैं और हमेशा बादलों में हैं. But that situation won't be so pleasing for Krishna to play on. और उस स्थिति में कृष्ण के लिए ये अच्छा नहीं होगा उसमें He खेले. said, so I very happily take your curse. तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपका श्राप स्वीकार करते हुए. And then he began to graduate, and this was in Satya Yuga. और ये सत्य युग की बात है, और वो धीरे धीरे छोटे होने लगे. So all that time he's been sinking into the earth. तो तब से वो थोड़ा थोड़ा जमीन में अंदर धस रहे हैं. And it's basically been calculated. Sorry, Mark? It's been calculated. और ऐसा इसकी गणना की गई है That when Krishna was here 5,000 years ago, Govardhana Hill was about 2 miles high. तो जब कृष्ण यहाँ 5000 वर्ष पहले थे, तो गोवर्धन पर्वत 2 मील ऊंचा था. Now he's about 80 feet high. अभी लगभग 80 फीट ऊंचा है. And a lot of Govardhana is under the ground already. और बहुत ज़्यादा गोवर्धन ज़मीन के नीचे है. So he was very pleased to receive the curse, and this is how Govardhana came to Vrindavan. और वो बहुत प्रसन्न हुए श्राप पाकर, और ऐसे गोवर्धन वृंदावन आए. So you can say, well, yes, that's good. Now we know Govardhana here in this world. तो आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं हाँ ये अच्छा है, इस जगत में गोवर्धन के बारे में हम जानते हैं. And people, they ask, well, there's Govardhana in the spiritual world also. और लोग पूछते हैं गोवर्धन आध्यात्मिक जगत में भी है. So how did Govardhana become manifest in the spiritual world? तो कैसे गोवर्धन आध्यात्मिक जगत में वो कैसे प्रकट हुए? So one evening during this Kartik Mas, Ras Leela was taking place on the banks of the Jamuna. तो एक शाम को कार्तिक महीने में रास लीला चल रही थी यमुना के तट पर. And after dancing for many, many hours, Sri Radha and Krishna, they were resting just in the middle of the Rasa Mandala. तो बहुत समय तक, बहुत घंटों तक नाचने के बाद राधा और कृष्ण रास मंडल के बीच में आराम कर रहे थे. And they were basically sitting and resting and just looking into one another's eyes. तो वो बैठे थे, वहाँ पर आराम कर रहे थे और एक दूसरों की आंखों में देख रहे थे. And then Sri Radha, she made a request to Krishna. और उस समय राधा रानी ने कृष्ण से एक विनती की. She said, Shyam, उन्होंने कहा, श्याम, if you're pleased with my love, अगर आप मेरे प्रेम से प्रसन्न हैं, and if you're pleased with the love
of all of the gopis, और अगर आप सभी भक्तों के प्रेम से प्रसन्न हैं, and if you're pleased with this forest of Vrindavan, और अगर आप इस वृंदावन के वन से प्रसन्न हैं, and if you're pleased with this arena of our rasa dance, और अगर आप इस रास मंडल से प्रसन्न हैं, I'm asking you to please fulfill one desire of my heart. मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे हृदय की एक इच्छा को पूर्ण कीजिए। And Krishna just folded his hands and he said, I will do anything to fulfill any desire of your loving heart. तो कृष्ण ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं कुछ भी करूँगा आपके हृदय की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। And then Sri Radha, she folded her hands, and this is what she said. और राधा रानी ने अपने हाथ जोड़े और ये कहा, I would like for you, Shyam Sundar, to create the most supremely pleasurable place that we can perform our pastimes here in Vrindavan. उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं चाहती हूँ सबसे उच्च कोटि की सुखद स्थान आप इस वृंदावन में बनाएं हमारे लीलाओं के लिए। So she had a desire, तो उनकी ये इच्छा थी, but it was the desire that Krishna just really think how to create the most wonderful, wonderful atmosphere in which they could enjoy their loving pastimes. तो ये उनकी इच्छा थी और कृष्ण सोच में पड़े कि कैसे इतना अद्भुत अद्भुत स्थान वो बनाए जहाँ वो अपनी लीलाओं का आनंद उठा सकें। So Krishna said, yes. कृष्णा ने कहा हाँ। And then Krishna sat there and he closed his eyes. और कृष्ण वहाँ बैठे और अपनी आंखें बंद की। And Krishna started looking deep within his heart. और कृष्ण बहुत गहराई से अपने हृदय के अंदर देखने लगे। And he was searching, Krishna was searching within his own heart for the very essence of his love. तो कृष्ण अपने हृदय में अपने प्रेम का सार खोज रहे थे। And when he sought out what he felt was the very essence of his love, that love manifest as a very small seed. और जब उन्होंने अपने हृदय में देखा वो प्रेम का सार क्या है, वो सार एक छोटे बीज के रूप में प्रकट हुआ। And then that seed came from his heart and it became a tiny stone. और वो बीज उनके हृदय से प्रकट हुआ और एक छोटा पत्थर बना। It fell right in the heart of the Rasa Mandala and that seed became a tiny stone. और वो बिल्कुल जा गिरा रस मंडल के बीच में और वो बीज छोटा सा पत्थर बना। And then in front of the eyes of the gopis, that tiny stone became a very large boulder. हाँ, तो फिर वो बहुत छोटा पत्थर वहाँ पर सभी गोपियों के आँखों के आगे एक बड़ा पत्थर जा बना। And then that boulder grew into a hill. और फिर वो एक बड़ा पर्वत जा बना। And then that hill grew into a mountain. और वो पर्वत ये गोवर्धन पर्वत जा बना। And as Sri Radha and all of her gopis were watching, Govardhana mountain appeared before their very eyes. और फिर राधा और सब गोपियाँ अपने आँखों के आगे देख रही थी किस प्रकार गोवर्धन पर्वत प्रकट हुआ। And when it appeared, it was complete with trees that were made from valuable gems. तो जब वो प्रकट हुआ वहाँ पर वृक्ष थे जो बहुत कीमती पत्थरों द्वारा बने हुए थे। And beautiful caves. बहुत सुंदर गुफाएं थी। And so many rivers flowing. और बहुत नदियाँ बह रही थी। And then after that happened, Sri Krishna looked up at Sri Radha and he said, "Are you satisfied?" और जब वो हुआ श्री कृष्ण राधा की ओर देखे और कहे, क्या आप संतुष्ट हो? And when she said yes, then Krishna said, "Now let us explore Govardhana Hill." फिर जब उन्होंने कहा हाँ मैं संतुष्ट हूँ, तब कृष्ण ने कहा चलो हम अब इस पर्वत का अन्वेषण करते हैं। So we have Govardhana in Goloka Vrindavan, we have Govardhana in this world. तो हमारे पास गोवर्धन है गोलोक वृंदावन में और गोवर्धन है इस जगत में। Now we should think, how do we look at Govardhana Hill? तो अब हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे गोवर्धन पर्वत की ओर देखें।
Because we know that when the Govardhana puja was performed, you know, little boy Krishna was standing there, and at the same time, he manifests this big form of Govardhana in the sky. तो हम जानते हैं जब गोवर्धन लीला हुई थी तब कृष्ण वहाँ एक छोटे बालक के रूप में खड़े थे और गोवर्धन ने बहुत ही विशाल रूप लिया था जो आकाश तक था. And when the Brahmins would make the offering, that big form would eat everything. और जब ब्राह्मण भोग चढ़ाते थे तो वो बड़ा रूप सब कुछ खा लेता था. And people could see small Krishna and this big form at the same time. तो वहाँ पर उपस्थित लोग देख सकते थे छोटा कृष्णा और ये विशाल रूप एक ही समय. And at one point, Krishna really became overwhelmed with ecstasy. और एक समय कृष्ण वाकई में अभिभूत हो गए परमानंद से. And he started declaring, Shailosmi, I am this hill, I am this hill. और वो घोषणा करने लगे कि मैं ही ये पर्वत हूँ, मैं ही ये पर्वत हूँ. So from that perspective, we devotees of Krishna, we see दृष्टि से हम जो कृष्ण के भक्त हैं वो गिरिराज को कृष्ण ही की रूप में देखते हैं. And Srila Prabhupada explains in his Krishna book और शिला प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में समझाते हैं that devotees of the Lord, they take the small stones from the Govardhana hill and they worship those small stones exactly in the way that they would worship Krishna. तो भक्त गोवर्धन पर्वत से छोटे छोटे पत्थर उठाते हैं और उन पत्थरों की उसी तरह उपासना करते हैं जैसे वो कृष्ण की करते. Just like I mentioned earlier, I've been doing puja to Giriraj for 36 years. जैसे मैंने पहले आपको बताया मैं 36 वर्षों से गिरिराज की पूजा कर रहा हूँ. And from the time I picked him up at Govardhana, I always saw him as Govinda. और जब से मैंने उन्हें गिरिराज से उठाया तब से मैंने उन्हें भगवान की तरह ही देखा है. So we see Giriraj as Krishna. तो हम गिरिराज को कृष्ण की तरह देखते हैं. But there is another perspective of Giriraj also. पर एक और दृष्टिकोण है गिरिराज जी का. And that is to see Giriraj as a devotee of Krishna. और वो है गिरिराज को भगवान के एक भक्त की तरह देखना. Now, this perspective was revealed to us by Srimati Radharani. और ये दृष्टिकोण को हमारे बीच में बताया था श्रीमती राधा रानी ने. In the Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम में. And I will find the verse if you give me just a moment. और मैं वो श्लोक ढूंढूंगा, मुझे एक क्षण दीजिए. It's from a chapter, it's from chapter 21 of the 10th canto. 10वें स्कंद के 21वें अध्याय से है. And this chapter is called Venu Geet. और ये अध्याय को कहा गया है वेणु गीत. It's a very beautiful chapter and it's recommended during Kartik month everybody read Venu Geet. बहुत ही सुंदर अध्याय है और ऐसा कहा गया है कि कार्तिक महीने में हर कोई वेणु गीत को पढ़े. Because it describes the burning love for Krishna that the young girls of Braja had before actually meeting Krishna. तो इस अध्याय में वर्णन किया गया है उभरते हुए प्रेम का जो जवान सखियों को कृष्ण के लिए होता है कृष्ण से मिलने के पहले. And the beginning of the chapter it describes how Krishna is leaving Braja village in the morning to go for cow herding. और बताया गया है कि कैसे कृष्ण सुबह को ब्रज गांव से निकलते हैं, गायों को चराने के लिए ले जाते हैं. And as he's leaving Braja, there are so many verses all spoken by different gopis of Vrindavan describing his beauty and how they see him. और जब वो व्रज से निकलते हैं बहुत श्लोक हैं जो वर्णन करती हैं कि कृष्ण की सुंदरता के विषय में और कैसे गोपियां उन्हें देखती हैं. For example, there's a very famous verse that many of you know. उदाहरण के रूप में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो आप सब जानते हैं. And it's a perfect meditation on Krishna. और ये बहुत ही उच्चतम ध्यान है कृष्ण पर. It says, wearing a peacock feather ornament on his head.
कृष्णा अपने सर पर मोर का पंख धारण किए हुए हैं। Blue carnicara flowers on his ears. तो कर्णिकार नीले फूल हैं उनके कानों पर। A yellow garment that is as brilliant as gold. पीला वस्त्र जो सोने की तरह है। And the Vaijayanti garland. और वैजयंती माला। Lord Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dancers as he entered the forest of Vrindavan. तो इस प्रकार से कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया जो बहुत ही महान नृत्यक की तरह है, जैसे वो वृंदावन के वन में प्रवेश किए। Beautifying Vrindavan with the marks of his footprints. और इस तरह उन्होंने वृंदावन को और सुंदर बनाया अपने चरण कमल से। The holes of Krishna's flute were filled with the nectar of his lips. तो जो कृष्ण की बांसुरी में जो छेद हैं वो भरे हुए थे कृष्ण के होठों से जो अमृत आता है And उससे। his cowherd boyfriends sang his glories. और उनके गोप मित्र ने उनका गुणगान किया। Okay, we just read the verse. अब हमने श्लोक पढ़ा। Now it's time for a little testing. और अब What was Krishna wearing? अब परीक्षा होगी, क्या कृष्ण पहने हुए थे? Huh? Yes, Mataji here said he was wearing a beautiful peacock feather upon his head. हाँ, माता जी ने यहाँ पे कहा मोर का पंख धारण किए हुए थे कृष्ण अपने सर पर। It was so beautiful and it was so big that it looked just like the rainbow. हाँ, वो इतना सुंदर था, इतना बड़ा था वो कि वो जो आकाश में इंद्रधनुष की तरह लग रहा था। Krishna had something on his ears. कृष्ण के उनके कान में कुछ है। What was it? क्या था वो? Huh? No, that's not what the verse said. नहीं, It कुछ said he नहीं है। had blue lotus flowers. He wearing a blue lotus flower on each ear. हाँ, तो श्लोक में कहा गया है नीले पद्म के फूल थे हर एक कान पर। And it says that his yellow garments were like what? और उनके जो वस्त्र हैं पीले वो किस तरह थे? Brilliant like gold. वो स्वर्ण की तरह थे। And सोने he की had तरह। he was showing a transcendental form that reminded people of what? और उनका दिव्य रूप था, उसको देख के क्या स्मरण होता था? The greatest of dancers. जो सबसे महान नृत्य करते हैं उसकी तरह। He was entering the village, he was walking, and the acharyas say he was walking like a baby elephant. हाँ, तो वो गांव में प्रवेश कर रहे थे, चल रहे थे, और आचार्य कहते हैं कि वो एक छोटे हाथी की तरह चल रहे थे। And everywhere he stepped in the dust of Vrindavan, he would leave his footprints. और जहाँ भी उन्होंने वृंदावन के धूल में चरण रखे अपने He had चरण his चिन्ह flute to छोड़ते। his lips, उनकी बांसुरी उनके होठों पर थी, and the sweetness of his lips was going inside of his flute. और जो उनकी होठों की मधुरता है वो उस बांसुरी में जा रही थी। And all of his boyfriends were chanting his glories. और सभी गोप उनका गुणगान कर रहे थे। So, तो many of the girls of Vrindavan, they describe different aspects of what happens when Krishna goes there. तो इस प्रकार अन्य गोपियां वर्णन करती हैं क्या होता है जब कृष्ण वहाँ वन में प्रवेश करते हैं। For example, some of the girls say, everybody look over here, okay? Puja over there is after. Give me 5 more minutes. You know, when the girls, when Krishna would go, the Jamuna would flow backwards. तो जब वहाँ पर सखियाँ जाती थी तब यमुना उल्टी दिशा में बहती थी। When Krishna would come by, the birds, their feathers would stand up in ecstasy. हाँ, तो जब कृष्ण आते थे जो पक्षी हैं उनके पंख हैं वो परमानंद में खड़े हो जाते थे। When Krishna would go by, the deer and the wives of the deer would go directly to Krishna, and the gopis would lament, you know, why is it that those girls can go to Krishna, but we can't go to Krishna? हाँ, तो जब कृष्ण वहाँ से गुजरते थे तो जो हिरन हैं और उनकी पत्नियाँ सीधे कृष्ण के पास जाती थीं, और गोपियाँ जो हैं वो कहती थीं कि अरे ये कृष्ण के पास जा सकती हैं सीधे से, हम क्यों नहीं जा सकते? Wherever Krishna goes, the clouds would come and make an umbrella.
तो जहाँ भी कृष्ण जाते थे वहाँ गाय आती थी और एक छाता बनाती थी। See the nice seva that everybody is doing for Krishna. देखिए कितनी अच्छी सेवा हर कोई कर रहा है They're कृष्ण के all लिए। serving so much better than we serve. वो हम सबसे कितने बेहतर तरीके से सेवा कर रहे हैं। And then finally, one girl said this verse. और अंततः एक सखी ने ये श्लोक कहा, And that girl is Srimati Radharani. और वो सखी है श्रीमती राधा रानी। She said, Hantayam adrir abala haridasa baryo jad Ramakrishna charanas parashash pramodai manam tanati sahago ganayos tayoryat paniya suyavasya kandarakandamulai. And Sri Radha says, of all of the devotees, Govardhana hill is best. तो श्रीमती राधा रानी ने ये श्लोक कहा और कहा, सभी भक्तों में से गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ हैं। Oh, all of my friends at Regent School. ओ मेरे सभी रीजेंट स्कूल के मित्र, This hill supplies Krishna and Balaram. ये जो पर्वत है ये प्रदान करता है कृष्ण और बलराम को, along with their calves and cows and cowherd friends, और गायों को, बछड़ों को और गोपों को, with all kinds of necessities. जो सब आवश्यकताएं उसे प्रदान करता है। Water for drinking, जल पीने के लिए, very soft grass, घास, caves and fruits, फल प्रदान करता है, flowers and vegetables. फूल और सब्जियां। In this way, Govardhana Hill offers respects to the Lord. इस तरीके से गोवर्धन पर्वत भगवान को सम्मान प्रदान करता है। And just being touched by the feet of Krishna and Balaram, और कृष्ण Govardhana Hill appears to be very jubilant. और क्योंकि कृष्ण और बलराम के पदचिन्ह उन पर लगे हुए हैं, वो बहुत प्रसन्न प्रतीत होते हैं। So this is the conclusion of Sri Radha. तो ये निष्कर्ष है श्रीमती राधा रानी The का। best of all of the devotees of Krishna is Govardhana Hill. कृष्ण के सभी भक्तों में से सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत। So what does that mean? तो इसका क्या अर्थ है? It means, like, simple example. इसका अर्थ है एक सरल उदाहरण से, Say I'm here in this desert called Dubai. तो सोचिए मैं यहाँ पर इस रेगिस्तान में हूँ, I need to drink water. मुझे पानी चाहिए, And if the only person in Dubai who has water is Sri Balaprabhu, what does that mean? और अगर पूरे दुबई में एक ही व्यक्ति है जिसके पास पानी है, वो है श्री वल्लभ प्रभु, तो I इसका have to क्या go to अर्थ Sri है? Balaprabhu. And I have to beg him for his mercy. तो मुझे श्री वल्लभ प्रभु के पास जाना है और भीख मांगनी है उनकी कृपा के लिए। Prabhu, please give me pani. प्रभु कृपया मुझे पानी दे, Please give me water. कृपया मुझे पानी दे। And because he is so merciful, he'll say, yes, take water, take as much as you और want. क्योंकि वो कृपालु हैं, वो कहेंगे लो पानी, जितना चाहिए लो। And in the same way, if we wish to have Krishna Prema Bhakti, और उसी तरीके से अगर हम कृष्ण प्रेम भक्ति चाहते हैं, he is so merciful. वो इतने कृपालु हैं, He is ocean of mercy. वो दया के सागर हैं। So in the same way, if we want to have Krishna Prema Bhakti, उसी तरीके से अगर हमें कृष्ण प्रेम भक्ति चाहिए, it is advised to us practicing devotees, हम साधकों को ये सलाह दी गई है, worship Govardhana Hill. गोवर्धन पर्वत की उपासना कीजिए, Beg Govardhana Hill for mercy. भीख मांगिए गोवर्धन पर्वत से कृपा के लिए। And what mercy is it that we want from Govardhana Hill? और क्या कृपा हम चाहते हैं गोवर्धन पर्वत से? We only ask for one thing. हम केवल एक चीज ही मांगते हैं, Please कृपया give me pure devotional service. मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए। Please give me pure devotional service to the feet of Radha and Krishna. कृपया मुझे राधा कृष्ण के चरण की शुद्ध भक्ति दीजिए। That's all I want. बस केवल यही मुझे चाहिए। Just like Lord Chaitanya said, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, Mama janmani janmanishwari bhavatad bhaktirahai tuki twai. Birth after birth, all I want is pure devotional service to your lotus feet. तो मम जन्मने जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी त्वयि के जन्म जन्मांतर के बाद मुझे केवल कृष्ण के चरण की शुद्ध भक्ति So चाहिए। today is a good day. तो आज अच्छा दिन है, The gates are open. दरवाजे खुले हुए हैं,
The gates of Giriraj's mercy are open. गिरिराज की कृपा के द्वार खुले हुए हैं. We should beg him, हमें उनसे याचना भीख मांगनी चाहिए. Dear Govardhan, please give me seva. प्रिय गोवर्धन, कृपया मुझे सेवा And दीजिए. all of our Vaishnavacharyas from the time of Chaitanya Mahaprabhu, और हमारे सभी वैष्णव आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के समय they से have prayed, Nija Nikita Nivasa Dehi Govardhan Tam. Oh, just give me shelter by Govardhan Hill. उन्होंने प्रार्थना की है कि केवल मुझे गोवर्धन पर्वत के वहाँ आश्रय दीजिए. He plays there with cowherd boys. वो वहाँ पर खेलते हैं ग्वाल की तरह. Krishna plays there with cowherd boys. कृष्ण वहाँ पर खेलते हैं ग्वाल बालों के साथ. Krishna plays there with gopis. कृष्ण वहाँ गोपियों के साथ खेलते हैं. Govardhan Hill has seen everything. गोवर्धन ने सब कुछ देखा है. And again, और फिर if we have some hope, अगर हम में कुछ उम्मीद है, and our spiritual masters have put in our heart a hope और हमारे गुरु ने हमारे हृदय में ये उम्मीद डाली है, ये आशा डाली है of one day कि एक दिन serving Radha and Krishna, राधा और कृष्ण की हम सेवा करें, seeing Radha and Krishna. राधा कृष्ण को देख पाएं. Giriraj has seen everything. गिरिराज ने सब कुछ देखा है. Go to Giriraj. गिरिराज के पास जाइए, Beg him for his mercy. अब भीख मांगिए उनकी कृपा के लिए. So it is a very nice day, तो बहुत ही अच्छा दिन है, and it's a very opportune day for all of us, बहुत ही अच्छा अवसर है सभी के लिए just to beg that mercy. वो कृपा प्राप्त करने के लिए. And I should stop, but I will speak just for a couple more minutes. मैं बस कुछ और मिनटों के लिए कहूँगा. Another aspect of the Leela that I mentioned is that Krishna wanted to curb the pride of his devotee Indra. और एक और पहलू मैंने जो इस लीला का बताया कि कृष्ण अपने भक्त इंद्रा के घमंड का नाश करना चाहते थे. And what was Krishna thinking? क्या कृष्ण सोच रहे थे? Krishna was thinking, Indra is my devotee. कृष्ण सोच रहे थे इंद्र मेरे भक्त हैं. Indra is my good devotee. इंद्र मेरे अच्छे भक्त हैं. But Indra, he's gotten a lot of wealth. परंतु इंद्र के पास बहुत धन है. Indra has gotten a lot of prestige. बहुत यश है इंद्र के पास. Indra has gotten a lot of opulence. बहुत ऐश्वर्य है इंद्र के पास. Indra has gotten a lot of power. बहुत शक्ति है इंद्र के पास. You know, all of these things have come to Indra. ये सभी चीजें इंद्र के पास है. And something else has come to Indra also. और इसके साथ साथ कुछ और भी इंद्र के पास आया है. Because he has fame. क्योंकि उनके पास यश है. Because he has wealth. क्योंकि उनके पास धन है. Because he has some knowledge. क्योंकि उनके पास ज्ञान है. Because he has some opulence. क्योंकि उनके पास कुछ ऐश्वर्य है. Indra has become proud. इंद्र अभिमानी हो गए हैं. And Krishna really does not like pride in the heart of his devotees. और कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में घमंड, उन्हें कृष्ण को ये पसंद नहीं है. We hear time and time again from our spiritual masters. हम बार बार अपने गुरु से सुनते हैं. We hear time and time again from Shastra. हम बार बार शास्त्र से सुनते हैं. If there's one thing Krishna really does not like in his devotees, that's for his devotees to be proud. अगर एक चीज कृष्ण अपने भक्त में नहीं पसंद करते हैं, वो है उस भक्त का घमंड में आना. And really, it's one of the most difficult things to give up. और वाकई में ये बहुत ही कठिन है इस घमंड को छोड़ They पाना. say in Kali Yuga, you know, if the beggar even has a penny, he's proud of that. तो कलयुग में कहा गया है कि एक भिखारी के बाद पास कुछ पैसे भी हैं तो भी उसको उन पैसों का घमंड है. What to speak, you know, if you have big bank account and big home and big prestige, all of these things can really contaminate you. तो उनका क्या कहना, जिनके पास बड़े बड़े बैंकों में खाते हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, ये सब चीज़ें उनको दूषित कर सकती हैं. But Lord Chaitanya has told us that if we want to chant the name purely, we have to really have this spirit of Trinadapi, Sunichena, Toror Iva, Sahishnuna, Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari.
We have to feel ourselves really lower than a blade of grass when chanting the holy names. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है कि अगर हमें सही तरीके से जप करना है तो हमारी ये चेतना होनी है, त्रिनादपि सुनी चेना, कि हमें अपने आप को एक घास के पत्ते से भी विनम्र समझना है, तब हम अच्छे से जप कर सकते हैं। We have to always be prepared to give respect to everyone. हमें हमेशा तैयार रहना है दूसरों को सम्मान देने के लिए, And never want even a gram of respect for ourselves. और अपने लिए एक ग्राम सम्मान भी नहीं चाहिए होना चाहिए। You see. And if we have this type of mentality, and if we're very tolerant, तो अगर हमारे पास इस प्रकार की चेतना है और हम बहुत सहिष्णु हैं, then we'll be blessed with the power to chant the holy names. फिर हम शिक्षित होंगे भगवान के नामों का जप करने के लिए। But what happens when we become proud? परंतु घमंड होता है तो क्या होता है? Prakrite kriyamanani gunai karmami sarvasha. We start thinking that we're the doers of everything. तो अगर हम घमंड में आ जाते हैं, हमें लगने लगता है कि हम हर चीज के करता हैं। Oh, I've studied Shastra so much, I'm a great speaker. ओ मैंने इतना शास्त्र पढ़ा है, मैं अच्छा वक्ता हूँ। Oh, I must be the best kirtan leader in the world. मैं कीर्तन का सबसे बड़ा नेता हूँ विश्व भर में। Oh, I must be the best cook that ever existed. मैं सबसे बेहतर रसोइया हूँ जो आज तक है। But Krishna says if you think you're the doer, then really you just have the mentality of an ass. तो कृष्ण कहते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप करता हैं तो आपकी मनोवृत्ति एक गधे की तरह है। And not a mudha, but a vimudha, a super ass. तो केवल एक साधारण मूढ़ा नहीं परंतु विमूढ़ा, एक बहुत ही उच्च कोटि का गधा। Like maybe you've heard me tell this story before. शायद आपने ये कहानी सुनी है पहले। But about 35 years ago, a long time ago, 35 वर्ष पहले, बहुत अधिक समय पहले, I was traveling with Indradumna Maharaj. मैं श्री इंद्रदुम्न महाराज के साथ भ्रमण कर रहा था। And Indradumna Maharaj, we were in France. तो हम फ्रांस में थे। And he understood that sometimes my temper is a little short. तो महाराज समझे कि कभी-कभी मुझे जल्दी गुस्सा आता है। And when somebody does something really stupid, I can say something bad. और अगर कोई बेहुदा कार्य करता है तो मैं उसे कुछ बुरा कह सकता हूँ। And he would always tell me, Maharaj, Vaishnavas do not use bad words. तो वो हमेशा मुझे कहते थे, महाराज वैष्णव कठोर वचन का उपयोग नहीं करते। Yes, Maharaj, I won't do again. Yes, Maharaj. हाँ महाराज, मैं So दोबारा then we नहीं went to a preaching program. फिर हम एक प्रचार कार्यक्रम के लिए गए। After the kirtan and lecture came the prasad. कीर्तन और कथा के बाद आया प्रसाद। And I sat down to preach to some guest. और मैं वहाँ पर बैठा कुछ मेहमानों को प्रचार करने And के I was लिए। trying to make some points from Bhagavad Gita. और मैं भगवत गीता से कुछ कहने लगा। And this person was speaking so much nonsense. और वो इतनी बकवास कर रहा था। And despite what I said, the person would just speak so much nonsense. जो कुछ मैं कहता उसके बाद वो कुछ बहुत बकवास करता। And my tolerance just came to its limit. और मेरी सहिष्णु रहने की हद सीमा पार कर And I गई। exploded. और मैं फट गया। I said, "You're an ass." मैंने कहा आप मूढ़ा हो। I said, "And you're not a regular ass. और आप एक साधारण मूढ़ा नहीं हो, You're a super ass." आप बहुत उच्च कोटि के मूढ़ा हो। And then Indradumna Maharaj, he heard me. और फिर इंद्रदुम्न महाराज He ने मुझे said, सुना। Maharaj, I told you not to use bad words. महाराज ने कहा, महाराज मैंने आपको कहा है इस प्रकार के शब्द नहीं उपयोग कीजिए। I didn't say it, Krishna said it. मैंने नहीं कहा, कृष्ण ने ये कहा है। People get some opulence, people get some name, people get some fame, and they become proud. And all of this false prestige that they get with all of this money and opulence and fame and so on, it just clutters the heart. And when the heart is cluttered, you can't really pray and cry with sincerity. तो लोगों को कुछ धन होता है, ऐश्वर्य यश प्राप्ति होती है, और इस सब चीज़ों को प्राप्त करने के बाद उनका हृदय गलत बातों से भर जाता है, और जब हृदय इस तरह भरा हुआ है तो आप सही से प्रार्थना नहीं कर सकते। My dear devotees, मेरे प्रिय भक्तों, we should never think
I am better than anyone else. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं किसी और से बेहतर हूँ, I have done more sadhana than anyone else. मैंने किसी और से भी ज़्यादा I साधना have की read हुई है, more books than anyone मैंने औरों else. से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं, I have given more classes than anyone else. मैंने औरों से ज़्यादा कथाएं की हैं, Because the mentality of a Vaishnava is this: क्योंकि एक वैष्णव की मनोवृत्ति इस प्रकार है, I am so fallen and devoid of Krishna's mercy that मैं- I am worse than everybody else. मैं इतना गिरा हुआ हूँ और कृष्ण की कृपा से वंचित हूँ कि मैं और सबसे अधिक गिरा हुआ हूँ. So, either from the material perspective or the spiritual perspective, if we're thinking, "Oh, I'm so big," it is just some pride. तो भौतिक दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम सोचते हैं कि ओ मैं इतना बड़ा हूँ तो ये केवल घमंड है. Rather, we should always think, इसके विपरीत हमें हमेशा सोचना चाहिए, I am the most fallen servant of the lotus feet of the Vaishnavas. मैं सबसे गिरा हुआ दास हूँ वैष्णवों के चरणों का. I am the most fallen servant of my spiritual master. मैं अपने गुरु का सबसे गिरा हुआ दास हूँ. I'm just the lowest. But then be fully empowered to perform devotional service with a heart that's free from pride. तो मैं सबसे अधम हूँ, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षित हुई अपने हृदय में अच्छे से भक्ति करने के लिए, अपने हृदय से भक्ति करने के And लिए. there's no one more expert in taking the pride from our hearts than Sri Krishna. और हमारे हृदय से घमंड को निकालने के लिए कृष्ण से अधिक और कोई दक्ष नहीं है. Every time our heads start to become inflated with pride, we are sure to receive the pinprick of Krishna's mercy. तो जब ही हमारा माथा घमंड से भरने लगता है, जरूर तब हम कृष्णा की ये कृपा प्राप्त करेंगे, हमारा घमंड चूर Has that करेंगे. ever happened to anyone here? यहाँ किसी के साथ ऐसा हुआ है? At least we have one or two honest people over here in Damodar Dash. इसका मतलब है हमारे बीच में केवल एक और दो ईमानदार व्यक्ति ही हैं. Okay. ठीक है. So Krishna, he removed the pride of Indra तो कृष्ण ने इंद्र का घमंड निकाला and created a situation where he could be with his devotees constantly और ऐसी स्थिति बनाई कि वो निरंतर रूप से अपने भक्तों के साथ रह सकते थे and performed his beautiful Leela in Vrindavan. और ये सुंदर लीला कर सकते थे So वृंदावन let's में. pray for the mercy of Giriraj Maharaj. तो गिरिराज महाराज से कृपा की विनती करते हैं. Bo Giriraj Maharaj ki. जय I could not hear you. Bo Giriraj Maharaj ki. जय Giriraj Maharaj ki. जय Bolo Bangse wale ki. जय. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Thank you very much. Hare Krishna.